Good morning, students. Now let's start with the miscellaneous exercise of chapter 10 vectors. The question number 7, vector A is equals to I plus j plus k. Vector B is given to us 2I minus j plus 3k. Vector C is given to us I minus 2j plus k. And now I have to calculate the value of 2a vector minus b vector plus 3c vector. 2a vector I plus j plus k minus b vector is 2I minus j plus 3k and c vector is 3 into I minus 2j plus k. Open the bracket, 2I plus 2j plus 2k minus 2I, sign change, plus j minus 3k plus 3I minus 6j plus 3k, which becomes 2I minus 2I will be cancelled out, only left out with 3I, 2j plus j, 3j minus 6j minus 3j, 2j plus j, 3j minus 6j minus 3j, 2k minus 3k minus k plus 3k, 2k. So that is our the value of 2a vector minus b vector plus 3c vector. Now let's move to the question number 8. Question number 8 is, show that the points A 1 minus 2 minus 8, B 5 0 minus 2 and C 11 3 7. So first we will find out the position vector of A. So position vector of A, that is we can write with respect to origin OAO I minus 2j minus 8k. Position vector of B, that is with respect to origin OB vector 5I plus 0j minus 2k. Position vector of C, that is OC vector 11I plus 3j plus 7k. And now we have to calculate we have to show that the following points are first of all collinear. For collinear, first I am going to calculate the value of AB vector, position vector of B minus position vector of A, that is 5I plus 0j minus 2k minus I plus 2j minus 8k. 5I minus I 4I, 0j plus 2j, 2j minus 2 plus minus 2 minus 8 minus 10k. That is the position vector of B minus position vector of, that means here minus I plus 2j plus 8k it will be, and minus 2k plus 8k will become 6k. Now I am going to calculate the value of the modulus of it. Magnitude 4 square 16, 2 square 4, 6 square 36, under root 56. Under root 56 can be written as 2 under root 14 units. 4 into 14, 56, 2 under root 14. Next, I am going to calculate BC, position vector of C minus position vector of B. So position vector of C is 11I plus 3j plus 7k minus 5I minus 0j plus 2k. That is 11I minus 5I, 6I, 3j minus 0j, 3j, 7k plus 2k, 9k. So here I am going to calculate its magnitude, that is 36 plus 9 plus 81. So that will be equals to 81 plus
990, 126. 126 can be written as 14, 9 goes to 36. That is 3 under root 14 units. Next comes AC vector, position vector of C vector minus position vector of A vector. That is, position vector of C is given to us 11I plus 3j plus 7k minus I plus 2j plus 8k. So 11I minus I, 10I, 3j plus 2j, 5j, 7k plus 8k, 15k. That is, modulus of this vector will be equals to now 100 plus 25 plus 225, that is 350. So 350, which can be written as 5 under root 14. 525. Just a minute. So modulus of AC is equals to square root of 350, that is 5 under root 14. Now since we can see that modulus of AB vector plus modulus of BC vector, which is equals to 2 under root 14 plus 3 under root 14, which is equals to 5 times of under root 14, which is equals to modulus of AC vector. Since sum of any two sides magnitude is equals to the length of the or magnitude of the third side, therefore the given points are collinear. Therefore the given points are collinear. That is the first case for the question number 8. And find the ratio in which B divides AC. And we have to find out the ratio. Ratio in which B divides AC. Let the ratio in which B divides AC will be given by B M is to N ratio. So in which B divides. So OB vector will be equals to M into final AC OC vector plus N into OA vector upon M plus N. So OB vector is given to us 5I plus 0j minus 2k is equals to M into OC vector 11I plus 3j plus 7k and plus N into I minus 2j minus 8k upon M plus N. Now cross multiply 5I plus 0j minus 2k into M plus N equals to 11M plus N into I common हो गया plus 3M minus 2N into J plus 7M minus 8K into K. Sorry, 8N. Here 5M plus 5N into I plus 0M plus 0N into J minus 2M plus 2N into K equals to 11M plus N into I plus 3M minus 2N into J plus 7M minus 8N into K. तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया इंटरनल वाला OB वेक्टर इक्वल्स टू M ऑफ फाइनल पॉइंट इज C, OC वेक्टर प्लस L इनिशियल इज OA, सो L के साथ इनिशियल वाला पॉइंट जाएगा OA वेक्टर अपॉन M प्लस N, OB वेक्टर 5 plus 0j minus 2k, then M into OA OC vector is 11I plus 3j plus 7k
L I minus 2j minus 8k upon n plus n cross multiply. Now here we are taking I common, so 5n plus 5n, j common, 0 into n plus 0 into n minus 2 into n प्लस 2 इंटू एल, के कॉमन, यहाँ पे भी आई कॉमन ले लेंगे तो 11n प्लस n आ जाएगा, यहाँ से j कॉमन लेंगे तो 3m माइनस 2n आएगा, यहाँ से k कॉमन लेंगे तो 7m माइनस 8n आएगा. नाउ वी कंपेयर एनी कोफिशिएंट्स. ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k, तो सबसे इजीएस्ट मेरे को ये वाला लगेगा. मैं i का i से भी टैली करूंगा तो वही रेशियो आना चाहिए, k का k के साथ भी टैली करूंगा तो वही रेशियो आना चाहिए, और j का j के साथ भी अगर टैली करता हूं तो वही रेशियो मिलना चाहिए. सो यहाँ पे हो जाएगा 3m माइनस 2n इक्वल टू 0 कोफिशिएंट, 3m इज इक्वल्स टू 2n, m by n is equals to 2 by 3. So our ratio is m is to n equals to 2 is to 3. क्योंकि रेशियो पॉजिटिव वैल्यू आया है इसलिए ये इंटरनली कहलाएगा. अगर ये नेगेटिव रेशियो आता सपोज -2/3 तो हमें इसे कहते हैं कि 2:3 एक्सटर्नली डिवीजन. माइनस इंडिकेट करेगा कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है और प्लस इंडिकेट करता है कि वो इंटरनली डिवीजन है. So that was our question number 8. Now let's move to the question number 9. Question number 9. Find the position vector of R. तो position vector of R हमें निकालना है. Divides the join of 2 points. So OP, position vector of OR ले लेते हैं अपन with respect to origin. OP हमारा हो गया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर. OQ वेक्टर हो गया हमारा 3a माइनस 3b वेक्टर. एक्सटर्नली डिवीजन, सो एक्सटर्नली यहाँ पे एक्सटर्नली डिवीजन है और रेशियो दिया हुआ है m/n 1:2. तो बाइसेक्शन फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल केस, पोजीशन वेक्टर ऑफ OR वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू फाइनल इज OQ वेक्टर. एक्सटर्नल में सेक्शन फॉर्मूला में माइनस साइन आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, n इंटू OP वेक्टर अपॉन m माइनस n. Now we have calculate bisection formula externally m/n 1:2. Bisection formula m OQ minus n OP upon m minus n. Substitute their values and we will get the result 3a vector plus 5b vector. Now we have to show that this OP vector 2a plus b vector is the midpoint of OQ and OR vector. So we apply the midpoint of RQ, that will be equals to OQ vector plus OP vector divided by 2, and we solve it and we get the position vector of OP, and that is our proof. Now let's move to our next question number 10. The two adjacent sides of a parallelogram are the two adjacent sides A, B, C, D. A vector equals to B vector equals to, A vector is 2i minus 4j plus 5k and I minus 2j minus 3k. We have to find out the unit vector parallel to its diagonal and also its area. So A vector plus B vector, the position vector of a diagonal
that will be C vector will be equals to A vector plus B vector. So 2I minus 4j plus 5k plus I minus 2j minus 3k, 2I plus I, 3I minus 4j minus 2j minus 6j, 5k minus 3k, 2k. So 3I minus 6j plus 2k is the diagonal vector, and we have to find out a vector, unit vector parallel to its diagonal. So unit vector will be now calculated by the formula C unit vector equals to C vector upon modulus of C, that is 3I minus 6j plus 2k upon under root over 3 square 9, 36 plus 4, that is 3I minus 6j plus 2k upon square root of 49, which is equals to now 3I minus 6j plus 2k upon 7. That is our answer for the unit vector. And now I have to calculate the area when the adjacent sides of a parallelogram are given, and it is given by the formula modulus of A cross B square units. So modulus, first we are going to calculate by the determinant form A cross B I j k. I A का है 2 minus 4 5 और B का है 1 minus 2 minus 3. Now I am going to evaluate this determinant I, top to bottom minus bottom to top, eliminating these two, first row and first column. 12 plus 5, sorry 10 minus j, this and this will be deleted, 2 into 3 minus 3 minus 6 and minus 5, and plus k, this will be deleted, 2 into minus 2 minus 4 and plus 4, which becomes 22I minus plus 11j, 22I plus 11j plus 0k. So area for it will be equals to modulus of 22 square. 22 square, that will be near about 22 square plus 11 square plus 0 square, and you calculate, that will be your final answer in square units. Okay. So that is our answer will be after calculation become 11 root 5 square units. Now next question number 11. Question number 11. Show that the direction cosines of a vector quantity is inclined to the axis, equally inclined. So if the direction cosines question number 11, since a unit vector equally inclined to the axis, therefore L equals to M equals to N equals to cos alpha equals to cos beta equals to cos gamma. Since L square plus M square plus N square equals to 1, so cos square alpha plus cos square beta can be cos square alpha or AB cos square alpha 1. 3 times of cos square alpha equals to 1. So cos square alpha is equals to 1 by 3. Cos alpha is equals to, that is 1 by root 3. So therefore here L, cos alpha, cos beta and cos gamma, all the values are equally inclined and it's equals to 1 by root 3. That was our question number 11. Now let's move to question number 12th question. Question number 12. This question is the most important question. So let A vector is equals to I plus 4j plus 2k, B vector is equals to 3I minus 2j plus 7k, and C vector is equals to 2I minus j plus 4k
vector D is perpendicular to both A vector and B vector, and C vector dot D vector is given equals to 15. So we have to calculate the value of D vector. Since D vector is perpendicular to both A vector and B vector, so therefore vector D will be parallel to A cross B vector. That is, D vector will be equals to some multiple of any constant into A cross B. अगर D वेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों के A और B वेक्टर के, तो ये D वेक्टर इस वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर के पैरेलल होगा, और पैरेलल कंडीशन में D वेक्टर इज ए सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ A क्रॉस B. नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट A क्रॉस B. I J K 1 4 2 3 minus 2 7. So that is lambda of A cross B. A cross, I am going to calculate lambda of A cross B. So lambda. So lambda into I, 4 into 7 28 and plus 4 minus J, 7 into 1 7 minus 6 and plus K minus 2 minus 12 minus 2 minus 12. So that is lambda into 32I minus J and minus 14K. So lambda of A cross B, lambda को बाहर रखेंगे, A cross B निकालेंगे, lambda बाहर, I first row and first column deleted, 4 into 7 28 minus of 2 into 2 4, that becomes 32, and बीच में आता है डिटरमिनेंट में माइनस साइन माइनस, and first row and second column will be deleted, top to bottom minus bottom to top, 7 minus 6, and next plus A, first row and third column will be deleted, and top to bottom minus bottom to top, minus 2 minus 12 minus 14. So this we got the value of lambda of A cross B. Now since the second equation what we are having given down there, C vector dot D vector equals to 15. So C vector हमारे पास क्या है, 2I minus J plus 4K into lambda 32I minus J minus 14K equals to 15. So lambda को फिलहाल बाहर रखिए, 32 into 2 64 minus j dot j 1 minus 1 into minus 1 plus 1, k dot into k dot k 1 minus 56, that is equals to 15. Lambda 65 minus 56 equals to 15. Lambda equals to 65 minus 56, that is 9. 15 upon 9, that is 3 5s are and 3 3s are. 5 by 3 is the value of lambda. So this was our proposed equation number 2, and this we have to now calculate lambda value. So the vector D, therefore vector D which is equals to lambda of A cross B, तो lambda की वैल्यू क्या आई है, 5 by 3, तो यहाँ पुट किया 5 by 3, और A cross B की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, लैम्डा ऑफ A क्रॉस B, लैम्डा की वैल्यू ये होगी और A क्रॉस B है 32I minus J minus 14K which is equals to 1 by 3 160I minus 5J minus 70K. So it is the most important question. Be careful, and it is the short method also for solving this question. वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी दिया है, जिसमें कि एक वेक्टर डी हमें निकालना है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और सी डॉट डी वेक्टर दिया है 15। अगर डी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो डी वेक्टर इस दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा। पैरेलल होने में हमारा क्या होता है, डी वेक्टर विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ दैट ए क्रॉस बी। So we calculate lambda of A cross B, we got this, and for with this equation
सी डॉट डी इक्वल टू 15, सी वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 4k और डी वेक्टर हमने अभी कैलकुलेट किया इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट अप करके और a क्रॉस b की वैल्यू निकली हुई है, सॉल्व कर देंगे एंड दैट इज आवर वेक्टर d. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Another important question is question number 13. That is the most important also. Question number 13. The scalar product of the vector I plus the scalar product or dot product you can say of I plus j plus k with a unit vector along the sum of a vector 2i plus 4j minus 5k and let this be b vector lambda I plus 2j plus 3k and it is equals to 1. We have to find the value of lambda. So first we calculate the sum. Vector c is equals to a vector plus b vector. So 2i plus 4j minus 5k plus lambda I plus 2j plus 3k. तो 2 प्लस लैम्डा I वेक्टर कॉमन हो जाएगा, 4j प्लस 2j 6j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k. ये हो गया हमारा सम ऑफ द वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर सी. अब वेक्टर सी का हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर सी, यूनिट वेक्टर सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर 2 प्लस लैम्डा I प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट ओवर 2 प्लस लैम्डा द होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4. अब सी वेक्टर और इस I प्लस जे प्लस के का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट 1 है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 प्लस लैम्डा I प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट ओवर 2 प्लस लैम्डा द होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 is dot product with I plus j plus k is equals to 1. It is given. अब इसको सॉल्व करेंगे. 2 प्लस लैम्डा इंटू I डॉट I 1 होता है, 2 प्लस लैम्डा हो गया, 6 हो गया यहाँ पे j डॉट j 1 और माइनस 2 k डॉट k 1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40. अब 2 माइनस 2 कट गया, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा द होल स्क्वायर प्लस 40. नाउ वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स एंड आई हैव टू सॉल्व दिस. On squaring both the sides and we square lambda plus 6 the whole square equals to 2 plus lambda the whole square plus 40. We get lambda square plus 12 lambda plus 36 is equals to 4 plus lambda square plus 4 lambda plus 40. 4 lambda, sorry, lambda square 12 lambda minus 4 lambda 8 lambda 44 minus 36 8 lambda equals to 8 lambda equals to 1. So that is our answer for the lambda. The scalar product of I plus j plus k with a unit vector along the sum of these two बोला है, तो सम निकाल लिए, वो सी वेक्टर पे स्टोर कर दिया इसका सम, और सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सी यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी. तो 2 प्लस लैम्डा I प्लस 6j माइनस 2k अंडर रूट ओवर इस कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट का माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4. और इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सी वेक्टर का
के साथ में इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने पे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल रही है 1. दैट्स ऑल. एंड नेक्स्ट क्लास आई विल बी सेंडिंग through the screen recorder PDF all for the next chapter. I am explaining in screen recorder that all formulas of the 3-dimension geometry chapter, next chapter which I am going to start, वो सभी का सभी पूरा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का मैंने एक साथ दे दिया जाएगा. वो पूरा आपको फेयर नोटबुक पे पूरे कॉन्सेप्ट or पूरे definitions and whatever the formulas I have given, you have to write down and you have to by heart it those all formulas, and then only you can able to understand the problems which will be I am going to explain in the next class. Thank you.